The next set we are moving towards in reported speech today is questions. You may be having sentences, and in fact अगर मैं कहूँ तो universal truth, past tense, questions और say the command, ये वाले जो sentences होते हैं ना, ये बहुत ज्यादा होते हैं. This is to see if you really understand commands, request or suggestion, advice. So we may be having questions which may pertain to these kind of statements. So today we are starting with questions, commands, request, suggestion or advice. Sometimes what happens is in your exams, you may be given this statement like, you may be having a simple sentence. The boy said to his friend, kindly help me in this project. Now ये जो मैंने said to and kindly को I have highlighted. This is because ये बता रहा है जो kindly word है that tells that this sentence is a request. ये sentence जो है एक request है, right? This is a request. The next is here telling the lawyers to sit down. It's a kind of command, order, आप कह सकते हो. The third sentence, the mother said to Paki, better you start learning. This is somewhere suggestion, or you can even say advice. So these are, first of all, I'm taking these sentences, then I'll move towards the interrogative. तो अब आपके पास तीन sentences हैं. One is where you find that this is a request, second is a command, and third one is a suggestion. तो जब हमारे sentences में ऐसे words आ गए, sit down, stand up, march ahead, या फिर please, kindly, something which is telling that it is a request or an advice, तो हम ऐसे sentences में क्या करते हैं? सबसे पहले तो we change this. अगर if it is not changed in the sentence, most of the time it is already given.
लेकिन अगर ये नहीं दिया हुआ है तो हम इसको अकॉर्डिंग टू दिस स्टेटमेंट, इस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग हम इसको सबसे पहले चेंज कर दें। यानी कि यहाँ पर अगर यहाँ पर ये है काइंडली है, तो ये आपका हो जाएगा, चेंज हो जाएगा इनटू रिक्वेस्टेड। इसके अंदर दिस विल बी रिटन लाइक कमांडेड या ऑर्डर्ड, एंड इसके अंदर एडवाइज्ड या सजेस्टेड। तो पहले तो आपको ये ध्यान रखना है कि ये 3 है। समटाइम्स बेटा नोट डाउन वेरी अलर्टली, समटाइम्स जैसे मैंने कहा रिक्वेस्टेड, the sentence may not be using the word requested, it may be a simple told. The boy told his friend भी कभी कभी दिया जाता है, but if your statement is a request, command or suggestion, तो आपका आगे सेंटेंस कैसे चेंज होगा? Like the very first is the boy requested his friend. अब हमें किस वर्ड से पता लगा था कि ये रिक्वेस्ट है? काइंडली से। तो ये वर्ड हम दोबारा यूज नहीं कर रहे हैं क्योंकि काइंडली को ही हमने रिक्वेस्टेड में चेंज कर दिया है। तो द बॉय रिक्वेस्टेड हिज फ्रेंड, फिर आएगा आपका वर्ड टू हेल्प हिम in, this will change into that project. The boy requested his friend to help him in that project. In case आपके सेंटेंस में आंसर में ऑलरेडी द बॉय रिक्वेस्टेड की जगह द बॉय टोल्ड लिखा हुआ है, तो भी आपका सेंटेंस यही रहेगा, द बॉय टोल्ड हिज फ्रेंड टू हेल्प हिम इन दैट प्रोजेक्ट। काइंडली वर्ड दोबारा यूज नहीं होगा, because the kindly word has already been shifted to reporting verb. The second one says, the judge said to the lawyers, sit down calmly. So we are using the word commanded. We can also use ordered. हम वो भी यूज कर सकते हैं. The judge commanded the lawyer to sit down. That sit down नहीं होगा, to sit down होगा. Now the third sentence. There are 2 ways. The mother said to Paki, better you start learning. This sentence can be changed. First, the mother, because it is mother, so you can use the word suggested or advised both. Suggested, ये मैंने हर डॉटर पाकी अपने आप डाला है, इट इज नॉट नॉर्मली उसमें दिया होता है. पाकी that it, sorry, one is the mother suggested oh no, I just forgot. The mother suggested her daughter Paki that she should start learning. This is one of the way.
वन ऑफ द आंसर ऑल्सो। और दूसरा सिंपल है, द मदर suggested Paki to, यहाँ पे क्वेश्चन है, बेटर यू स्टार्ट लर्निंग। एंड मोस्ट ऑफ द टाइम MCQ में पिछली बार भी आया था, दिस इज द ऑप्शन विच इज गिवन। The mother suggested her daughter Paki that she should start learning. The words are not given, but you have to understand कि जब आपके सेंटेंस में ऐसा लिखा है बेटर, तो इट शुड हम यूज करते हैं। We use should because should is somewhere related to something which should be, मतलब जो करना चाहिए, करना चाहिए, और इसीलिए we use should. Now let us move towards, इसी तरीके से मान लो एक क्वेश्चन है, the doctor said to the patient, take these medicines regularly. The doctor advised the patient to take those medicines regularly. So if you are having the sentences which pertain to the sentence statements like request, command, advice, suggestion, तो आपको इनमें सबसे पहले अपने रिपोर्टेड वर्ब को चेंज कर then you should change the sentence accordingly. Now comes the questions. Now comes the interrogatives. Now beta, in the interrogatives we have two kinds of interrogatives. One is the WH family we have, यानी कि what, when, where, which, right, how. कुछ हमारे होते हैं जो ऐसे स्टार्ट होते हैं, what is the time now, when did you go to the market last time, which is your favorite food, where is the purse I gave to you. तो कुछ तो हमारे sentences होते हैं जो WH family से pertain करते हैं, and then we have the sentences which may be starting with the modal verbs like do, does, did, can, may, shall, will. We have then, is, am, are. We have two kinds of interrogations. One is the modal verbs, एक verb से start होते हैं, और दूसरे आपके WH family से start होते हैं. The difference when we are changing them is, पहला जो आपके दिमाग में आना चाहिए, जिसको हम कहते हैं ना पानी में डालकर घोल के पी जाओ, just dissolve it and drink. While changing the questions, this is specifically those who are learning for the first time, while changing the questions into statements, हम लोग जो है क्वेश्चन को क्वेश्चन में चेंज नहीं करते हैं, हम क्वेश्चंस को स्टेटमेंट्स में चेंज करते हैं. तो द वेरी वेरी यूनिवर्सल रूल इज कि पहले आपका सब्जेक्ट आएगा, देन आपका वर्ब आएगा.
पहले सब्जेक्ट आएगा देन वर्ब आएगा. दिस इज अ यूनिवर्सल रूल विच यू नीड टू जस्ट गल्प इट. चाहे क्वेश्चन किसी से भी स्टार्ट हो रहा हो, पहले सब्जेक्ट आएगा फिर वर्ब आएगा. ठीक है. नाउ द सेकेंड रूल. Let us first take the sentences which start with the WH families. I'm taking two examples, one in the present tense and second one in the past tense. The chef said to the customer, "What will you like to have?" And the second one is, the very first says, "What will you like to have?" Said to the customer. ठीक है. First we are going for the WH family. What will you like to have? अब सेकंड आप लोग याद रखो. पहला मैंने आपको सिखाया था सब्जेक्ट प्लस वर्ब. सब्जेक्ट पहले आएगा, वर्ब बाद में आएगा. सेकेंडली मैंने आपको पहले सिखा दिया लास्ट उसमें, जब हमारे मोडाल वर्ब्स चेंज होते हैं. दिस आई हैड टॉट इन द लास्ट क्लास. when you are changing the modal verbs, तो आपके बाकी verbs change नहीं होते. आपके बाकी verb change नहीं होते. तो अब हमारा है the chef said to the customer. तो ये हमारा इंटेरोगेशन है, क्वेश्चन है, आस्क है. आप कुछ मतलब कि आपके उसमें कुछ भी दे सकते हैं. The chef asked the customer. सबसे पहले हमने क्या चेंज किया? We have changed this. Now, in the sentences which are starting with WH family, हमारा what ही रहेगा, where ही रहेगा, which ही रहेगा, how ही रहेगा. right? इनमें कोई चेंजेस नहीं होंगे. ये वैसे what लिखा. But now, what will you like to have? अब इसमें हमारा जो सब्जेक्ट है वो है you. You हमारा सब्जेक्ट है. This is our subject. तो पहले हम सब्जेक्ट को यूज करेंगे. What, अब हम मानते हैं कि कस्टमर लड़का है. What he, उसके बाद हमने किसको चेंज करना है? मोडाल को. What he would like to have. What would he like to have नहीं आएगा, क्योंकि अगर आपने पहले वर्ब लगा दिया तो वो क्वेश्चन होता है. और हमें रिपोर्टेड स्पीच में मतलब कि स्टेटमेंट में चेंज करना होता है. वी हैव टू चेंज द क्वेश्चंस इनटू स्टेटमेंट्स. सो इफ यू आर पुटिंग द वर्ब एट द फर्स्ट, देन इट बिकम्स अ क्वेश्चन. सो व्हाट वुड ही नहीं होगा, व्हाट ही वुड होगा. सेकेंडली,
ना ही like चेंज होगा और ना ही have चेंज होगा, because most of the time the students write what he would like to had. तो to के साथ जो लगता है वो चेंज नहीं होता. टू के साथ हम हमेशा जो है फाइनाइट लगाते हैं, तो हैव ही रहेगा हमारा. तो द शेफ आस्क्ड द कस्टमर व्हाट ही वुड लाइक टू हैव, और दिस इज अ सिंपल सेंटेंस. अब अगर हमारा WH फैमिली में ही वी आर हैविंग समथिंग इन पास्ट टेंस, the chef said to his boss, how was the dish? Now this how was जो है वो बता रहा है कि जो हमारा सेंटेंस है वो it is in past tense, right? So now how it will change? The chef asked his boss. मैंने आपको अभी एक रूल बताया था, what है, when है, where है, how है, तो वो पूरा का पूरा वैसे ही उतर जाता है. that how was the dish नहीं होगा, पहले subject फिर verb. तो how the dish had been, हमारा was change होगा into had plus third form, had been. How the dish had been. How was the dish नहीं होगा. So this is the rule for changing the questions which starts with any WH family. जैसे when did you come, ना एक सेंटेंस है, इसी में हम ऐड कर देते हैं. हम मतलब just for example, when did you come, this is also in past tense. तो जो भी हमारा क्वेश्चन है, the chef asked his boss when he had come. When did he come नहीं होगा, when he had come. पहले सब्जेक्ट फिर वर्ब, पहले सब्जेक्ट फिर वर्ब. दिस शुड बी इन योर माइंड ऑलवेज, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम द स्टूडेंट्स आर मेकिंग द मिस्टेक ओनली इन दिस पार्ट. Most of the time, 99% when the question form is there, they change the sentences. ये तो पूरा ठीक लिख देंगे, the chef asked his boss, then how was the dish लिख देंगे, how the dish had been. तो पहले the dish आएगा, फिर was को हमने change करना है. Now comes the sentences with starting with the modal verbs like can, could, may, shall, is, am, are, anything. इसका एक सिंपल फंडा है मेरा बच्चा कि हम इन सेंटेंसेस को कैसे आइडेंटिफाई करते हैं. तो इनका आइडेंटिफिकेशन ये होता है कि अगर आप इन क्वेश्चन को पढ़ोगे तो इसके दो ही आंसर हो सकते हैं, यस या नो. क्योंकि certain times the students ask me कि मैम what is the difference between a sentence which starts with how and what is a sentence. तो जो how होता है तो उसका कोई आंसर होता है, लेकिन can वाला, is वाला, इनमें yes या no ही होता है. So this is the first understanding concept. Now what is the changing concept? पहला concept हमारा ग्राउंड रूल यही रहेगा, पहले सब्जेक्ट फिर वर्ब, पहले सब्जेक्ट फिर वर्ब, राइट. ये तो चेंज नहीं होगा. दिस विल बी द यूनिवर्सल रूल फॉर चेंजिंग अवर क्वेश्चंस, राइट.
Now let us come to the question part. I had taken one question. The pilot asked the hostess, "Did you sleep well yesterday?" ये तो past tense में. First, let me take one present tense. The first one is the shopkeeper said to Raja, "Have you given the bill?" And the second one is, "Can you take my luggage down?" दोनों जो है questions हैं which are starting with some of the modal verbs. So अब ये हमारे मेन है जिनको हमें चेंज करना है. The shopkeeper said to Raja. So definitely the shopkeeper inquired, asked, and I told you that day asked के साथ कभी भी to नहीं लगता. Asked Raja. Now the rule says, ऐसे sentences में हम use करते हैं if या whether. या तो हम if use कर सकते हैं या फिर हम whether use करते हैं. Whether हमने लिख लिया. Then the ground rule is पहले subject फिर verb. पहले subject फिर verb. तो if he had, have का had, given the bill. If, अब ये क्वेश्चन ऐसे नहीं होगा, the shopkeeper asked Raja, had he given the bill, नहीं होगा. If he had given the bill, he पहले आएगा, had बाद में आएगा. The same rule is for the second. The man asked the porter. Same. If लग गया, no that, nothing. Ask the porter, that if नहीं होगा, if that नहीं होगा, सिर्फ if या whether. If can you take my luggage है, यहाँ पर this is the subject. If he पहले subject फिर verb. If he, can का past tense, could take his luggage down. यहां पर could took नहीं होगा. We change only the modals, we don't change the main verb. If he could took नहीं होगा. If he could take. If he could take. Now there was one question in the past tense. The pilot asked the hostess, "Did you sleep well yesterday?" Now this question is given in past tense. The question is given in past tense. So
the pilot asked the hostess, same rule, if, अब hostess girl है, पहले subject फिर verb, पहले subject फिर verb. If she, अब डेट को चेंज करना है, प्रेजेंट चेंज होता है इनटू पास्ट, पास्ट चेंज होता है इनटू पास्ट पार्टिसिपल, डिड चेंज होता है इनटू हैड. ये मैंने रूल्स आपको लिखवाए थे. इफ यू रिमेंबर, आई हैड ऑलरेडी शेयर्ड दिस रूल विद यू. यहाँ पर मैंने आपको करवाया था. पास्ट है तो पास्ट में, डिड विल चेंज इनटू हैड. तो according to that, if she had, a verb का third form, sleep, slept, slept, sleep, slept, slept. If she had slept well yesterday, will change into the previous day. That means while you are changing the past sentences, you have to be double sure. एक तो आपका past tense will change into past participle. Secondly, आपको जो did वाले sentences हैं उनमें आपको पहले subject और फिर verb को लिखना है. I'm doing some examples just for your now these are 4 questions. All are very simple. 3 are starting with do and did, and 1 is starting with will. The woman said to the maid, do you work daily? The armed man said to the guard, did you see my partner? Shreya said to Sunita, will you go to the shop now? Meeta said to the child, do you know how to swim? All are very simple. Only you need to keep
in mind the rule. The woman said to the maid, most of the time, this portion is given in the answer also. The woman asked the maid if, यहां तक. अब हमारा इसमें वर्ब, सॉरी, सब्जेक्ट है यू. मेड है, लड़की है, तो इफ शी, अब डू हमें चेंज करना है, तो हम डू को कभी भी चेंज डिड में नहीं करते. हम डू को चेंज डिड में नहीं करते अनलेस एंड अनटिल द सेंटेंस रिक्वायर्स, क्योंकि यहां पर डू यू वर्क है. तो इफ शी वर्कड डेली, डू का पास्ट टेंस इज डिड, लेकिन डिड और वर्क आप दोनों साथ में नहीं डालते हो. डिड प्लस वर्क इज वर्कड, डिड प्लस वॉक इज वॉकड, डिड प्लस स्पीक इज स्पोक. So we don't need to use the word did. The next is the armed man said to the guard, did you see my partner? The armed man inquired the guard, same if he, अब ये वाला आपका past tense, this is past tense. Did will change into had. If he had seen his partner, see, saw, seen, see, saw, seen, और had के साथ थर्ड फॉर्म आता है. श्रेया asked सुनीता whether, पहले हमारा चेंज होगा सब्जेक्ट, whether she, फिर चेंज होगा वर्ब, will का पास्ट टेंस would, go to shop, और नाउ चेंज होगा into then because this is an adverb. Meeta said to the child, do you know how to swim? If पहले हमारा सब्जेक्ट, if he or she, अब do का पास्ट टेंस did और no का पास्ट टेंस knew, तो हमें यूज करना है knew. So these are the rules which you have to put while you are changing the sentences. बच्चा जब आपके सामने sentences आता है तो अभी कैसे question आपके आ सकता है? One is in this form. You may be asked to completely change it, right? Second is the MCQ forms which we have already discussed, and even we have practiced some questions, even I have taken the test also. तो एक आपका ऐसा हो सकता है. And the third one might be, you might be given a complete passage
Now this is a very simple conversation, and this is the third typology which may come in your sentence. The one is you may be having, क्योंकि अभी जो हमारा जो फिलहाल का जो new pattern है, that says that you may be having a direct sentence where you have to completely change the entire statement. At the same time, when we look into the another form, that is the objective type, there you might be given the options. And third, which has been a regular for the past many years, is a complete conversation, and then you will be given the options in the down, and you have to fill, change and fill. But it is not an MCQ. You have to change the reported statement. This is very different. अब आपने ऊपर देखा, I need to go to Chandigarh. I want 2 tickets for today. अब यहाँ पर क्या है? A curious passenger went to the ticket window and told the clerk. अब हमें क्या चेंज करना है? ये वाला सारा. That she wanted. अब मुझे she कैसे पता लगा? यहाँ पर मैम लिखा हुआ. She wanted to go to Chandigarh and that she needed wanted 2 tickets for that day. She needed या she wanted 2 tickets for that day. The clerk said, sorry ma'am. Sorry is apologize. So the clerk apologized and said that there is no seat in any train. So there was
no seat in any train. Next is passenger, please check for today, tomorrow. अब यहाँ पर already it is given. To this the passenger requested, उसी में दिया हुआ है तो उसी को हमने ले लिया है. The passenger requested to check for the next day. It is already given. अब the clerk asked, can I book in AC chair car? The clerk further asked, if, फिर he, I लिखा था क्लर्क के लिए इसीलिए पहले सब्जेक्ट फिर वर्ब. If he could book in AC chair car, and she answered, yes you can. The relieved passenger answered in yes लिखा है ना, इसीलिए yes के लिए हमने यहाँ यूज किया है affirmation. Affirmation का मतलब होता है yes, negation का मतलब होता है no. Affirmation का मतलब होता है yes and negation का मतलब होता है no. The relieved passenger answered in affirmation that he could book. You can लिखा है ना, तो he could book. So this is the third type of question that normally comes in our exams. And whatever the type of question is, whether you have to change it in the direct sense or through the MCQs or this way, आपको यही rules याद रखने हैं while you are changing the statements, verb, reported statement, universal truth. While you are changing the commands, questions, then you have to identify the words for those. Questions में अगर WH फैमिली है तो वो वर्ड तो सेम रहेगा what, when, लेकिन पहले सब्जेक्ट फिर वर्ब, changing into past tense. And if it is past tense, it would change into had plus verb का third form. And then if the questions are with modal verbs, then that would change with if or whether subject plus verb का past tense or past participle form and the sentence. Questions will also change into statements. Request will also change into statements. So there is nothing कि जैसे लिखा हुआ did you see the movie? Did he see the movie? नहीं होगा. If he had seen that movie. This is how we change reported verbs or reported speech.